जय श्री कृष्ण। तमारा स्वागत करूँ छूँ काजलना रसोई घर में। तो आज आपणे बनाववाना छे खूब ज टेस्टी और खूब ज ओछा तेल में बनती बजार जेवी ज पावभाजी। जे आ रीतथी बनावशो तो खूब ज टेस्टी बनशे। तो विडियो में एंड सुधी बन्या रहेजो। अने जो मारी चेनल में नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं अने बाजू में रहेलुं बेल आइकन दबाववानुं भूलता नहीं। तो चालो बनावी लईए पावभाजी। पहला तो आपणे बधा शाक ने वाफी लईए। तेना माटे कुकर में 1 ग्लास जेटलुं पाणी एड करीशुं। पछी आपणे तेमां मैं बधा शाकभाजी ने कटिंग करी लीधा छे। पहला तो आपणे तेमां રીંગણના टुकड़ा एड करीशुं। पछी आपणे तेमां थोड़ी दूधी एड करीशुं। पछी थोड़ा बटेटा एड करीशुं अने थोड़ी कोबी एड करीशुं अने फ्लावर एड करीशुं। हवे आपणे तेमां अर्धी चमची जेटलुं मीठुं एड करीशुं अने अर्धी चमची हळदर एड करीशुं। हळदर ने बाफवा में एड करवाथी तेनी साथे सारी रीते मेल्ट थई जाय छे। तेनो टेस्ट खूब ज सरस आवतो होय छे। तो आवी रीते गैस ने शरू करी अने आ बधा शाक ने आपणे बाफी लेवाना छे। 2 सीटी थवा देवानी छे। सारी रीते तेने बाफी लेवाना छे। तो हवे शाकभाजी चढ़े त्यां सुधीमां आपणे टमेटा अने कांदानी ग्रेवी बनावी लईए। तो एक चॉपर में मैं अहीं टमेटा एड कर्या छे तेने आवी रीते झीणुं पीसी लेवानुं छे। टमेटाने झीणा पीसवा खूब ज जरूरी छे। तेनाथी पावभाजीनी जे ग्रेवी छे ते खूब ज सरस थशे। तो आवी रीते टमेटाने झीणा मेश करी लेवाना छे। तो आप जोई शको छो आवी ज रीते पछी आपणे कांदाने पण झीणा मेश करी लईशुं। तो आप जोई शको छो आपणा टामेटा सारी रीते मेश थई गया छे। आवी रीतनुं पीसी लेवानुं छे। तेने एक वाटकामां काढी लईए अने हवे पछी आपणे कांदाने पण ई रीते झीणुं ग्राइंड करी लेवानुं छे। तो आप जोई शको छो आवी ज रीते कांदानी पण ग्रेवी बनावी लेवानी छे। तो आपणा कुकरमां पण सीटी थई रही छे अने आप जोई शको छो पावभाजीना वघार माटेनी आपणी बधी ज सामग्री तैयार थई गई छे। हवे आपणे पावभाजीनो वघार करी लईए। तेना माटे मैं अहीं एक जाडा तळियावाळुं बाउल लीधुं छे। तेमां 3 मोटा चमचा जेटलुं मैं तेल एड कर्युं छे। तेल गरम थाय पछी तेमां हींग एड करीशुं। पछी तेमां आपणे लसणनी पेस्ट उमेरीशुं। तेने पण तेल साथे सारी रीते मेल्ट करी देवानी छे। पछी आपणे तेमां कांदा एड करीशुं। कांदाने पण तेल साथे सारी रीते आवी रीते मेल्ट करी लेवाना छे। थोड़ी वार कांदाने चढ़वा देवाना छे। पछी आपणे तेमां 1 चमची जेटलुं मीठुं एड करीशुं એટલે આપણા કાંદાથી સારી રીતે ચડી જશે। પછી આપણે તેમાં વટાણા એડ કરીશું। તેને પણ તેલ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાના છે। થોડીવાર વટાણાને ચડવા દેવાના છે। તો હવે આપણા શાકભાજી બફાઈ ગયા છે તેને જોઈ લઈએ। તો આપ જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે બધું શાક બફાઈ ગયું છે। હવે તેને એક બાઉલમાં આપણે કાઢી લઈએ અને પછી તેને આવી રીતે चमचानी मददथी झीणुं पीसी लेवानुं छे। तो आप जोई शको छो आवी रीतनुं बधा शाकभाजीने मेश करी लेवानुं छे। तेने आवी रीतनी पेस्ट बनावी लेवानी छे। आवी रीतनुं अधकचरुं पीसी लेवानुं छे। हवे पछी आपणे तेने भाजीमां एड करीशुं। तो आप जोई शको छो आपणा वटाणा पण सारी रीते चढ़ी गया छे। हवे आपणे तेमां टमेटानी ग्रेवी एड करीशुं। तेने पण तेनी साथे सारी रीते मिक्स करी देशुं अने थोड़ीवार आपणे तेने चढ़वा देवानी छे। तेमां तेल छूटुं पड़े त्यां सुधी टमेटानी ग्रेवीने चढ़वा देवानी छे। तो आप जोई शको छो तेल छूटुं पड़ी गयुं छे। तो हवे आपणे तेमां 1 चमची काश्मीरी लाल मरचुं एड करीशुं। 1 चमची आपणे तीखुं मरचुं एड करीशुं। 1 चमची धाणा जीरुं पाउडर एड करीशुं। 1 चमची पावभाजी मसालो एड करीशुं। 1 चमची गरम मसालो एड करीशुं। तो आ बधा मसालाने सारी रीते मिक्स करी अने थोड़ीवार तेलमां सातળી लेवाना छे। एटले मसालामांथी तेल छूटुं पड़वा मळे त्यां सुधी आवी रीते मसालाने सातળી लेवाना छे। तो आप जोई शको छो आपणा मसाला सारी रीते सतळाई गया छे। तेल उपर आवी गयुं छे। पछी आपणे हवे आपणे तेमां जे शाकभाजी मेश कर्या हता ते एड करीशुं। ते आ बधा शाकभाजीनी ग्रेवीने तेने मसाला साथे सारी रीते मिक्स करी लेवानुं छे। तो आप जोई शको छो आपणी पावभाजी तैयार थवा आवी रही छे। आवी रीते थोड़ीवार मिक्स करशो अने थोड़ीवार तेने उकळवा देवानी छे। पछी आपणे तेमां थोड़ुं લીંબુ एड करीशुं। तमे स्वाद अनुसार एड करी शको छो। पछी थोड़ीवार भाजीने सारी रीते उकळवा देवानी छे। तेनुं बधुं ज पाणी बाळવું खूब ज जरूरी छे तो ज पावभाजीनो बजार जेवो टेस्ट आवशे। तो जेटલું पाणी बळे तेटલું બાળી देवानुं छे। तो आप जोई शको छो आवी रीते पावभाजीने सारी रीते चढ़वा देवानी छे।
તો આપ જોઈ શકો છો તેલ ઉપર આવી ગયું છે ને આપણી પાવભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આવી રીતની બનાવી લેવાની। હવે આપણે પાવ સાતળી લઈએ। તેના માટે મેં એક રોટલીનો જે તવો આવે છે, લોઢી આવે છે, તેના ઉપર બટર લગાવી અને તેને થોડી વાર ગરમ થવા દેવાના અને પાવને આવી રીતે પહેલાં થોડા સાતળી લેવાના અને પછી આપણે તેમાં જે પાવભાજી બનાવી તે થોડી આવી રીતે એડ કરવાની તવા ઉપર અને પાવને વચ્ચેથી કાપી અને આવી રીતે તે મસાલા પાવભાજી સાથે આવી રીતે ફેરવશો એટલે બધો જ પાવભાજીનો મસાલો પાવ સાથે ચોંટી જશે। તો આવી રીતના પાવભાજી સાથે ખાવાના આવી રીતના મસાલા પાવ બનાવી લેવાના। તો આપ જોઈ શકો છો અહીં આપણે બંને પાવ એ રીતના બનાવી લીધા છે। થોડા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું। તો આપણી પાવભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈએ। તો આપ જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી પાવભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। એકદમ જ બજારમાં મળે તેવી ખૂબ જ ઓછા તેલમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી પાવભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે આ રીતથી ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ખૂબ જ મસાલેદાર બને છે। હવે આપણે તેને ઉપર થોડા ધાણાથી ગાર્નિશ કરીશું અને થોડું બટર એડ કરીશું। તો આપ જોઈ શકો છો કેટલી સરસ આપણી ભાજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। તે ખાવામાં પણ એટલી ટેસ્ટી લાગે છે। તો તૈયાર છે આપણી પાવભાજી। તો જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો આવી જ અવનવી રેસીપીને જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે ફરી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।